हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है मेरे बाकी वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा जिसका आईएम में आने से पहले पैकेज होता था 3 लाख एंड अभी आईएम जम्मू से उसने क्रैक किया एक 64 lakhs का पैकेज, वो भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से एंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर प्लस सुनो डोमेस्टिक पैकेज है ये। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि यार इंटरनेशनल पैकेज होगा, मिलता है इतना 60-70 लाख तो नहीं, डोमेस्टिक पैकेज है। तो इस पॉडकास्ट में हम यश से पूछेंगे कि क्या उसकी जर्नी थी एंड कैसे उसने 64 lakhs का पैकेज क्रैक किया। प्लस मैं और आप हम सब लोग जानेंगे कि हम लोग भी एक पैकेज कैसे क्रैक कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने वीडियो में पैकेज का मेंशन नहीं किया है क्योंकि जब हमने वीडियो शूट किया था ना तब अलाउड नहीं था पैकेज बताना। अभी कैसे भी जुगाड़ करके पैकेज बता रहे हैं आपको एंड पैकेज इज 64 lakhs डोमेस्टिक। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो इन 1.25x बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड आई डोंट वांट यू टू मिस एनी इन्फॉर्मेशन। Please like the video and let's continue. Hello guys, welcome to India's first ever MBA podcast. And for this first episode, we have a really special guest with us, Yash, whose MBA journey is really inspiring, not just for me, but for our batchmates as well. So without wasting any time, we will hear from Yash about his MBA journey and his experiences. So hi Yash. Hi, Keshav. Hello, everyone. First of all, Keshav, thank you so much for inviting me for your first podcast ever. I'm really obliged for that. Just a disclaimer, guys. I am an extremely camera shy person. Now, coming to my profile, so I am born and brought up in a small district in Maharashtra called as Satar. I've completed my 10th and 12th from there. And post which I've pursued my, again, I was preparing for IIT JEE as, almost majority of the aspirants do. But यार क्या कर सकते हैं, मतलब IIT तो हुआ नहीं. So yeah, I had to, I completed my bachelor's in mechanical engineering from Pune. Course is structured in such a way that, the 4 years of engineering, out of those, 3 years are in college, in classroom, and 1 year is, in the industry. You have to work as a full-time intern. Nice. I have always been of the belief that classroom learning is, not that valuable as, hands-on learning. And I've always been vouching for more and more experiences. So this was the reason why I decided to pursue mechanical sandwich engineering, apart from my academics. So I was also a part of one of the teams in our institute. So we represented our college at a national level. We built race cars, and I was a part of the team for 3 years. I started as a junior brakes engineer, and I was extremely passionate about automobiles since childhood. So I got a chance to build a race car, and I led the team of 27 members to build this race car, Sorry. participate at a national level event, and we were able to achieve a few awards during this journey. So it was Really? more experiences, and cherry on top was the awards that we won. So apart from this, post my undergrad, I joined Mahindra and Mahindra Limited. I worked in supply chain management, and yeah, not going a lot into my work experience again, because this is not a conventional interview, as you mentioned. This is a podcast, so I have to keep it interesting. So I had 32 months of work experience prior to joining MBA. In MBA, it's been a wonderful journey, and currently I'm pursuing my MBA majors in marketing, analytics, and strategy. And I completed my, apart from this, I am also the part of the placement committee. So I'm a senior placement coordinator. I was also part of the admission committee. And yeah, I completed my summer internship in Microsoft as a product management intern. And I was fortunate enough to secure a pre-placement offer from Microsoft as well. So yes, you have secured your SIP in Microsoft and even you got PPO as well. So not just me, even a lot of people want to know what your profile looks like and what were your academics. Were you a topper? And we will just like to know how you prepared for SIP as well as even how students can prepare for it. Right. So, again, I'm not a 999 across profile. Okay. So, in my opinion, a profile is more than just your academics, So that's why I've always been outside the classroom more than in classroom. I had a lot of extracurricular activities, a lot of PORs, a lot of internships during my undergrad. So my academics looked like I had a 9, 8, and 6.6 during my graduation. Coming to summer internship preparation, so there are 4 important aspects to a profile always. The first is your academics. The second is the internships or the work experience that you have. The third is the certifications and the hard skills that you have.
And fourth is the positions of responsibility, or the extracurricular activities that you have done during your life. So again, academics is something that is very crucial when it True. comes to shortlisting. It is. But now coming on to the second aspect, that is about your internship and work experience. So for freshers, definitely try to pursue a lot of internships into the domain of interest that you wish to explore. And try to always the intent while you pursue any internship, or while you talk about your internship, should be how have you basically created an impact during that internship or during that work experience. And again, what were the key learnings out of that internship or the work experience. Yeah. So this thing even answer one of the most asked question कि केशव मैं अपनी इंटर्नशिप कहाँ करूँ, पेड हो अनपेड हो, एंड एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए. तो एक्चुअली तुम्हें करनी वही है जहां तुम एक्चुअली सीख पाओ, लर्निंग्स कर पाओ, एंड इवन इन योर इंटरव्यू सीवीज यू कैन एक्सप्लेन इट. Definitely, as Keshav mentioned, spot on. Yeah. So next is certifications. Yeah, certifications and hard skills. It's just not that you have to pursue certification for the sake of it. इंटरनेट पे बहुत सारे पेड प्लस फ्री सर्टिफिकेशंस मिलेंगे आपको. कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. यू कैन गो एंड परस्यू सर्टिफिकेशंस. एंड हार्ड स्किल्स ऑब्वियसली दे मैटर लॉट, बिकॉज आखिर में तुमको अगर काम करना है तो स्किल्स भी होना चाहिए. ट्रू. तो एक्सेल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स. आजकल डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर एन मार्केटिंग एस्पिरेंट. सो गूगल के कुछ फ्री सर्टिफिकेशन है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग. सो आई हाईली रिकमेंड यू परस्यू दैट. Then एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि फ्री वर्सेस पेड कोर्सेज, तो क्या कोई डिफरेंस होता है या दोनों का ही उतना रेलिवेंट होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज ऐसा कोई ये नहीं है कि फ्री सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा खराब होते हैं या पेड आर वेरी गुड. It's just that sometimes the paid certifications, they just try to basically they just try to collate whatever information is available within a very specified amount of hours. And तुम टाइम बचा सकते हो बेसिकली. इंटरनेट पे तो यार यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री में, ठीक है, विच यू कैन स्टडी. बट वही है कि बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, एंड टाइम इज अ बिगर इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू मनी. दैट इज व्हाट आई फील. Now coming to the fourth aspect, that is PORs and your extracurricular activities. So I have always believed a lot on PORs and extracurricular activities, because बहुत सारे experiences मिलते हैं तुम्हें. You face a lot of situations, you get to work as a part of lot of teams, and this is basically what gives you the the actual skills that you need to work in an environment. Right. So yeah, that is what in general people can do before pursuing an internship. An add-on tip, which people, it's very basic, but most people do not pay a lot of attention to it, is, the habit of reading news. So being a business leader, it's very important. तुम्हें पता है देश दुनिया में क्या चल रहा है, and which technology is disrupting which sector, and how is it going to impact your business, because everything at the end of the day सब कुछ interlinked है. So it is very important कि तुम सारे news से you are very well versed. That is one of the important aspects. यश ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि if you are preparing for any internship या फिर even placement as well ना, तो पहले study the role कि कंपनी को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कि जो तुम्हारी स्किल्स हैं, फर्स्टली गेट सम स्किल्स, एंड अगर नहीं है तो ट्राई कि उनको अभी लो, एंड उनको देन क्रिएट अ स्टोरी दैट विल आई थिंक हेल्प यू अ लॉट, राइट? एब्सोल्युटली. जैसे केशव ने बताया कि अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो कंपनी की क्या डिमांड है, एंड हाउ यू कैन सप्लाई द स्किल्स और व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू फुलफिल द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. दैट विल लैंड अप योर गुड अपॉर्चुनिटी. एंड जस्ट टू ऐड टू इट, केशव ने मेंशन किया कि तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस है, अगेन ट्राई टू बी वेरी अजाइल व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. बिकॉज एक ही तुम अगर हार्ड प्रोफाइल लेके हर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करोगे तो दैट डज नॉट वर्क. हर कंपनी के हिसाब से यू शुड बी एबल टू basically tweak your profile or tweak, how your experiences demonstrate your skills. If you want to connect to Yash, इसका LinkedIn प्रोफाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यू कैन सेंड हिम द रिक्वेस्ट, एंड बहुत ज्यादा मैसेजेस मत करना, ठीक है? तो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो. तो यश, जैसे अभी हमने बात की तुम्हारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होने की, एज वेल एज तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की, प्लस तुमने पीपीओ भी स्कोर किया.
इसके अलावा भी यश इज इन द टॉप 5% ऑफ द बैच, अगर हम एकेडमिक्स की बात करें। इसके अलावा यश को आई हैव सीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद देम, यू हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन एज वेल। तो यार इतना सब मल्टीटास्किंग कैसे? क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है, मुझे डीएम्स भी आते हैं कि केशव कि क्या मुझे सोने को भी मिलेगा एमबीए में जाके? क्या मैं अपनी जिम भी कंटिन्यू कर पाऊंगा 1 घंटे के लिए? इवन मुझे आज भी एक कमेंट आया। तो प्लीज टेल अस कि इतना मल्टीटास्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, एंड क्या सबको टाइम मिलने वाला है बाकी चीजों के लिए? Hmm. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से इट्स अ होक्स कि बिल्कुल सोने नहीं मिलेगा एमबीए में. Yes, there are phases, there are days when you get absolutely hardly 1 or 2 or 3 hours to sleep, or you don't even get time to sleep. Presentations होते हैं, deadline submissions होते हैं वगैरह. उस टाइम पे तो it's very difficult to gain upon some sleep. But again, as I mentioned, prioritization is what has absolutely helped me. As Yash mentioned कि प्रायोरिटाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इवन मैंने भी ये कहीं पढ़ा था कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे इजी पार्ट पता है क्या है? तुम चीजों को प्रायोरिटाइज कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हें ऐसा भी नहीं होगा कि हर चीज करनी ही करनी है, सब कंफ्यूजन नहीं होगा। बस जो चीज अभी करनी है उसको अभी करना ही है, या फिर जो कल चीज करनी है उसको कल से पहले तुम्हें करना ही है। एंड मैं भी एक्चुअली यही चीज फॉलो करता आया हूँ जब से मैंने एमबीए स्टार्ट किया है। तो मैं बस डेडलाइन देखता हूँ कि ये डेडलाइन तब की है, उस टाइम से पहले मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी ही करनी है। तो इससे क्या होता है, बाकी लोगों को भी लगता है कि तुम बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर रहे हो और खुद का काम कुछ मिस आउट नहीं होता। ऑब्वियसली बहुत चीजें रह जाती हैं। मैं भी सोया रहता हूँ पूरा टाइम, मैं बहुत लेजी हूँ वैसे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं और ज्यादा चीजें कर सकता था। बट प्रायोरिटाइज करने से ना काफी चीजें आसान हो जाएंगी। एब्सोल्युटली प्रायोरिटाइजेशन एंड उसके साथ में जब तुम अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो भी एब्सोल्युटली फोकस्ड एट इट. जो चीज कर रहे हो उसमें पूरा एनर्जी और इंटेंसिटी अगर डालोगे ना तो वो चीज वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Exactly. तो वो टाइम बच जाता है. राइट राइट ठीक है. तो जब भी मैं क्लासेस में होता हूँ मैं अच्छे से क्लासेस सुनता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मेरे को फिर पढ़ाई करने के लिए इतना टाइम नहीं देना पड़ता है. हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज क्लासेस बहुत अच्छी होते हैं IIMs में, एब्सोल्युटली. बहुत अच्छा कंटेंट होता है हर क्लास। तो यश, लेट्स मूव ऑन टू योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कि व्हाट वर द हार्डशिप्स एंड व्हाट वर द की हाइलाइट्स दैट यू हैव डन? Right. So I pursued my summer internship in Microsoft. I basically worked on a product called as Flip. So this is a startup that Microsoft had acquired 5 years back. And iska pehle naam tha Flipgrid. Apart from this, the highlight about my internship was also that, so ye Flip jo hai, तो Microsoft Flip की जो leadership है, they were coming to India for the very first time at Noida office. And there is an event called as ShareFest. So I've been very fortunate. My manager gave me an opportunity to present my recommendations and my learnings through the internship at this event called as ShareFest. And I was really appreciated for the work that I had done. And then at the end of the day, at the end of the internship, I definitely I had to go through a presentation, I had to go through a review, and I had to present all my recommendations कि कैसे हम लोग user experience improve कर सकते हैं. Going through for this I had to take a lot of interviews, छोटे छोटे बच्चों से लेके the teachers, because teachers are the ones who are who basically give assignments to students. So बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ी, interaction करना पड़ा, developers से बात करनी पड़ी, trying to understand the engineering effort that goes in, and trying to understand how which feature to prioritize, which feature to develop. So it was an exceptionally rewarding internship personally as well. And the cherry on the top was, I was also able to participate in one of the offsite events, team building events, jisko bolte hain, and I was able to connect with all the members in the team at a very personal level. So it was a very fulfilling internship experience for me, to be very honest. After my PPO, now since I'll be joining the organization, I have to prepare myself again, because तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो भी सारे इलेक्टिव्स है, सो सेकेंड ईयर द ब्यूटी ऑफ IIMs and general management programs is that you get to choose what subjects do you want to study. So फिर मैंने मेरे जो सारे इलेक्टिव्स, जस्ट अ सेकंड आई विल टेल यू गाइस हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो एमबीए का फर्स्ट ईयर IIMs में हर किसी के सेम सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, यश के, मेरे, एंड ईच एंड एवरी पर्सन. एंड सेकेंड ईयर वी गेट द चॉइस कि हमें कौन कौन से डोमेन्स में जाना है. एज यश मेंशन कि he went into marketing strategy as well as analytics, so he has selected those subjects only. Exactly. So as you mentioned Keshav, तो मैंने क्या किया कि once I was very sure I have got a PPO, so what I did was, in order to prepare myself for the next stage,
मैंने मेरे सारे इलेक्टिव्स उस हिसाब से चूज कर लिए। जैसे मैंने मार्केटिंग एनालिटिक्स एक सब्जेक्ट ले लिया, बिग डेटा एनालिटिक्स ले लिया, and consumer behavior le liya, just to make sure that this helps me in my end goal of being a good product manager. So in the placement committee there is again one of my colleagues who is going to join as a product manager. His name is Deva. So I used to have a lot of interaction with him regarding different products, how we could improve the user experience, how we could change the user journey. And this interaction is what helped me a lot, definitely. Apart from this one skill, I thought जिस पे मुझे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी, which can only be improved, is storytelling. Because again storytelling has a huge impact on how you're able to communicate to the stakeholders of what do you exactly want to pursue. So I'm trying to improve on that aspect of storytelling. And yeah, definitely apart from this, the other learnings that I had from the things I did, case competitions, placement committee, and other interacting with diverse set of candidates at IIM Jammu, that is what adds up to the experience. Really nice, Yash. Talking about placement committee, अब जैसे सभी को पता है कि यश प्लेसमेंट कमेटी का पार्ट है, तो यश यू हैव ऑब्वियसली वर्कड अ लॉट इन प्लेसमेंट कमेटी, बट प्लेसमेंट कमेटी ने तुम्हें कैसे हेल्प किया एंड हाउ डिड इट हेल्प यू की शेपिंग योर पर्सनालिटी? Honestly speaking, before joining MBA or while joining MBA, I had set some goals or set some pointers for myself. So those three things were, I wanted to join a committee called as the Industry Interaction Cell, which basically host various guest sessions, and they are a part of the placement cell. Then the other thing was I wanted to be a gold medalist, and the third was I wanted to win case competitions. Sadly यार मैं ये सब कर नहीं पाया, but the only thing was I changed. I spoke to some of the seniors, and the placement committee induction that happened, the orientation program that happened, that just changed my goal set completely. Because placement committee is one committee where you are responsible, you are owning up to the responsibility of the careers of your entire batch. And what better an opportunity than this to get smiles on the faces of the entire batch. So you are basically responsible for the careers of them, and again a reason for the smiles for their family as well. So what placement committee requires is extremely high level of ownership, being extremely ethical, and working, I mean giving it your everything. And again, since you are the liaison between the institute and the corporate, so you again become very professional because you have to deal with a lot of HR learnings. What placement committee gave me is a lot of experiences, a lot of tough situations that I had to deal with. So I had to deal with a lot of stakeholders. Batch के साथ deal करना पड़ता है, HRs के साथ deal करना पड़ता है, administration के साथ deal करना पड़ता है, fellow committees के साथ deal करना पड़ता है. So you put yourself into such a situation which grooms you extremely well. And since you are again responsible for careers of people, so there is always a sense of caution plus a sense of responsibility. And this just puts this ownership, just takes you to a different level altogether. And I think this just added to my sense of ownership as a person. And at the same time you also need to empathize, you also need to understand what the batchmates want, what do they want to pursue, and also try to connect with the HRs and get opportunities for them. So again that matchmaking is something that you become very good at. Demand and supply, as I mentioned, this is something which I do day in day out. And apart from this, you put yourself under a lot of pressure because batch ko place karna hai, batchmates ko place karna hai. So there is a lot of pressure to get very good opportunities. Unfortunately, with the help of my team, so I am extremely fortunate to be a part of this team, because there are a wonderful set of people whom I got a chance to work with day in, day out, 24/7, and who have always been there throughout this MBA journey. Yeah, even everyone has seen everyone working in the placement committee. And one thing I would like to say is कि the placement committee at IIM Jammu is really approachable, and even Yash is, कभी भी कुछ भी होता है, we directly call Yash या फिर किसी भी member placement committee को. So here the environment is really positive. The placement figures are really very good right now. I mean, thanks a lot. It's the equivalent effort of the faculties, the chairperson placements, the placement team, and the entire batch as well, because they are the ones putting in efforts at the end of the day. तो यश आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, बट हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो है
टिप्स एंड सजेशंस। तो ऐसी क्या टिप्स है जो तुम देना चाहोगे कैट एस्पिरेंट्स को एज वेल एज जो एमबीए एस्पिरेंट्स है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ काफी सारे बी स्कूल्स एंड आईआईएम्स में जाने वाले हैं। First has been the peers, and so the people you are surrounded with are the ones who define you. So it's very important कि तुम्हारे mentors और तुम्हारे दोस्त जो है वो काफी सही है। MBA journey में there have been few very good mentors I found, who have come in terms of my friends. Absolutely is they are the key stakeholders in my success or whatever experience I have had. It's really nice of you that you are acknowledging this. Again, coming to the next point I would like to say is, बहुत बार ये हो जाता है कि लोग है ना कंपटीशन में पड़ जाते हैं कि यार ये मेरे से बेटर है, वो मेरे से बेटर है, एंड वो काफी रैट रेस में पड़ जाते हैं। तो दिस बिकम्स वेरी टॉक्सिक एंड दिस एड्स अ प्रेशर इन ऑन यू। तो व्हाट आई फॉलो इज, मैं आई जनरली एक्नॉलेज कि पीपल आर बेटर देन मी, आई एम नॉट गुड एट एवरीथिंग, देयर आर पीपल हु आर बेटर देन मी, मुझे बस उनसे सीखना है। ये मुझे मेरे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप ने सिखाया है कि आई हैव टू हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट एंड ओपन माइंडसेट। राइट। और हमेशा मैंने एक्नॉलेज ट्राई किया कि मैं एक्नॉलेज करूँ किसी का स्ट्रेंथ, उससे जाके बात करूँ कि यार तू इसमें कैसे अच्छा है, हाउ डू यू डू दिस, प्लीज टीच मी एज वेल। एंड पीपल आर मोर देन विलिंग टू शेयर हाउ डू दे डू दिस, एंड दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी। एंड होता ये भी है कि अगर सिर्फ खुद से compete करोगे तो यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बट अगर दूसरों से compete करोगे तो बस प्रेशर ऐड करेगा। बिल्कुल, और बुरा भी लगता जाएगा यार कि उसको अच्छा मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, एंड यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग, बहुत गंदी फीलिंग आती है। डेफिनेटली, बिकॉज हर एक की जर्नी अलग है, हर एक के पाथ्स अलग है, कौन कहाँ से आता है, किसके लाइफ में क्या लिखा हुआ है तुम्हें पता नहीं है। तो बस अपने आप से कंपैरिजन करो एंड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। द नेक्स्ट थिंग इज whatever you are doing, give your absolute best. मेक श्योर तुम जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज में, उसमें यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। अगर तुम टाइम के बारे में अगर तुम वैल्यू कर रहे हो टाइम को एंड तुम तुम्हारा बेस्ट दे रहे हो उस टाइम में। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बहुत बार ये हो जाता है कि people go for quick monetary benefits rather than long term learnings. This is something which I think so I have been a little bit smart with, बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसे किया है ना कि मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की है विच हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लर्निंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो लॉन्ग टर्म लर्निंग जो है ना वो हेल्प करता है तुम्हें ग्रो करने में एज अ पर्सन। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड एक्चुअली बताऊं, सेम चीज मेरे साथ हुई है। तो क्या हुआ, जब हमारा समर इंटर्नशिप का टाइम था, तो उस टाइम पे आई साइन आउट फ्रॉम द प्रोसेस, क्योंकि मैंने बाहर से इंटर्नशिप लिया था। उस टाइम पे क्या हुआ, आई गॉट गुड कंपनसेशन, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, खर्चा हुआ नहीं, एंड मैंने यूट्यूब भी किया, तो मेरे को कि मैं काफी पैसे अर्न कर लूंगा। बट लर्निंग्स कहीं ना कहीं वहां पे कम हुई मेरी। तो मैं वो चीज आज भी था कि यार अगर मैं वो चेंज कर पाता तो मैं मॉनिटरी नहीं देखना चाहिए था मुझे। इवन मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना चाहिए था, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे बहुत चीजें सीखने को मिल सकती थी। तो मैंने आके अपने फ्रेंड से उनका एक्सपीरियंस सुना, जैसे अभी तुमने भी बताया। तो या इवन आई वुड से कि मॉनिटरी मत देखो, जहाँ 15-20 लाख दे रहे हैं तो उसके बाद आके ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। एंड यस, एज केशव मेंशन्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में, एक और चीज जो है वो है कंफर्ट जोन। अपना कंफर्ट जोन छोड़ के टेस्टिंग सिचुएशंस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में अगर खुद को डालोगे ना तभी ग्रो करोगे एज अ पर्सन। एब्सोल्युटली। तो दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू अ लॉट, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट एज वेल। yes, I'm extremely grateful to my peers, my parents, because मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा एक फ्री हैंड दिया है कि बेटा तुझे जो परस्यू करना है, जैसे परस्यू करना है, इट्स योर लाइफ, यू हैव द पाथ। बहुत लोग इतना फॉर्चुनेट नहीं होते बिकॉज पेरेंट्स ऑलरेडी डिफाइन एड अ प्रेशर। तो मेरे पेरेंट्स भी एक्चुअली चाहते थे कि मैं सीए बनूं पहले, बट ऐसा कुछ उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर कभी डाला नहीं। वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज communication, the power of communication. It is very important to be an extremely good communicator and a storyteller. Man is a social animal जैसे बोलते हैं, ठीक है। तुम लोगों के साथ काम करोगे, तुम टीम्स में काम करोगे, तुम टीम्स लीड करोगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल्स आर मच 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 मोर इम्पोर्टेंट देन योर हार्ड स्किल्स। ये मुझे एमबीए ने सिखाया। सही है। तो यस, दैट हैज बीन, आई थिंक सो मैंने कुछ कुछ चीजें कवर की है, आई थिंक, विच आई थॉट कि इस लिमिटेड टाइम में मैं बता, I wanted to convey.
and I hope कि I would have done justice to this video. डेफिनेटली आई बिलीव कि हमने बहुत चीजें कवर कर ली हैं काफी कम टाइम में। तो यार यस, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स को भी जो उन्होंने पूरा देखा। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू यश, इसका लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन सेंड हिम द रिक्वेस्ट, एंड बहुत ज्यादा मैसेजेस मत करना, एंड होपफुली हम फ्यूचर में भी ये पॉडकास्ट करेंगे कभी जब तुम माइक्रोसॉफ्ट में होगे। Definitely. And, thanks a lot, Keshav, and thank you everyone, for patiently hearing to this video. I would like to thank my friend as well, who basically pushed me to record this video, and especially to Keshav again. I hope कि, मेरे experience से probably कोई relate कर पाए, and थोड़ा सा अगर कुछ, उसके life में कुछ अगर थोड़ा बहुत improvement भी हुआ, तो I would consider it as a cause served. So yeah, Definitely. Thank you so much, Keshav, again. Thank It was you so wonderful much. talking to you. Thank you so much guys. Thank you so much for watching our video. And अगर पसंद आए तो please like and subscribe the channel.